इट इज अवार्ड सीजन, इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट पिछले पूरे सीजन में जो अचीवमेंट थी। एंड प्रीमियर लीग के तो अवार्ड सीजन का नॉमिनेशन तो आ ही गया है सबसे पहले। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो होते हैं, विच इज पॉसिबली द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट अ प्लेयर कैन गेट फॉर हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन अ सीजन इन द प्रीमियर लीग, उसके नॉमिनीज आ गए हैं। एंड दैट इज व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट टुडे। वेलकम टू टॉप कॉर्नर। आज के वीडियो में, जैसे मैंने बोला, हम उन 6 नॉमिनीज की बात कर रहे हैं। We're going through what got them selected into the nominations and हमारे हिसाब से किसके chances ज्यादा हैं जीतने के अवार्ड। आई नो इट्स ऑब्वियस, बट बात तो करना बनता है यार, कम से कम, है ना? So let's get into it. सबसे पहले तो I'll just go through the nomination, then एक एक करके बात करते हैं। The 6 players that have been nominated are मोहम्मद साला, obviously भाई From 47 Liverpool. गोल असिस्ट, 47 गोल असिस्ट का सीजन मारेगा कोई तो उसको नॉमिनेशन तो मिलेगा ही, स्पेशली 47 गोल असिस्ट इन अ टाइटल विनिंग। तो या लिवरपूल से ही अलेक्सिस मैकलिस्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द मोर अंडररेटेड परफॉर्मर्स ऑफ दिस सीजन। ब्यूटीफुल गोल, इसका पूरा सीजन का गोल्स कैटलॉग देखोगे मजा आ जाएगा। अलेक्जेंडर इसाक, अमेजिंग प्लेयर, 27 गोल्स मारे इसने इस सीजन में एंड ही डिड नॉट लुक लाइक ही कुड बी स्टॉप्ड। इसको बीच में इंजरीज हो गई थी, नहीं तो ये और मारता। डेक्लन राइस है इस टीम में, पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल दिस सीजन। जो वो सेकंड भी पहुंचे हैं वो भी इस बंदे की वजह से ही पहुंचे हैं मेरे ख्याल से। तो फिर उसके बाद आपका है कोल पामर। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई सेकंड हाफ में थोड़ा सा ठंडा हो गया था, कोल पामर एक्चुअली बिकेम रियली इनइफेक्टिव फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, पर ही डिड पिक अप एंड फर्स्ट 6 मंथ्स जो चेल्सी का एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रन था, दैट वाज ऑल डाउन टू कोल पामर। All through देन it. ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस इज आल्सो नॉमिनेटेड। आई नो देयर विल Fernandes. बी जो भी आई नो देयर विल बी डिबेट अबाउट इट कि भाई टीम 15 पे फिनिश करी है, ये प्लेयर बेस्ट प्लेयर के नॉमिनेशन में आसपास भी कैसे है? बट ही इज द ओनली वन हु केप्ट देम फ्रॉम गेटिंग रेलीगेटेड। ऑनेस्टली एज अ यूनाइटेड फैन शिवम यही बोलेगा, आई एम श्योर, अभी जब हम शिवम Yeah. के पास जाएंगे तो I think that is what has led to his nomination. Maybe other players could have been counted also, but yeah, let's start with Bruno Fernandes itself. कि भाई शिवम बताओ कैसे ब्रूनो फर्नांडिस का नॉमिनेशन जस्टिफाई? Okay. Let me hold this up. 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 Love this jersey too. ये इस वजह से है नॉमिनेशन, वरना नहीं बनता था। इट्स जस्ट हमारे क्लब के नाम की वजह से आई थिंक नॉमिनेशन आ गया, विद नो ऑफेंस टू ब्रूनो, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट द पीपल अराउंड हिम weren't, generally aren't, especially in the club he plays. तो उस वजह से I would say मेरे हिसाब से भी नॉमिनेशन नहीं बनता था। I am surprised to see him there. There could have been other names in. We can discuss that in length as well. Just to say, Mbeumo had a very good season playing for a smaller club. Sujay mentioned in a couple of videos back, Sells was a great keeper. He could have been in there. There were other from maybe from Liverpool itself. Van Dijk could have been there very easily. From Arsenal itself, maybe not just Declan Rice, maybe one of the defenders. I'm sure Lewis Kelly in the younger department, but others. But Bruno, I think इसीलिए है, और मैंने ये कुछ टाइम पहले फॉर अदर्स टू नो, आई थिंक सुजन आई वाज स्पीकिंग, और मैंने भी ये कहा था कि वो अंधों में काना राजा है। वो हाँ, तो वो शायद इस वजह से, उस वजह से, that is okay, because the rest of what I want to come others to. weren't as strong in front, like aside him, तो शायद इस वजह से आई थिंक उसका नॉमिनेशन और आ गया, हाईलाइट हुआ वो यूनाइटेड में एज द सोल डिसेंट प्लेयर, I'd say. पर यार like you said, Mbeumo भी था, Eze Crystal Palace, that was he was very good throughout this season. You had good players from other clubs also. Is this just a big club tax almost? Rex भाई It क्या is बोलते close to it. It is close to it. वैसा दिख रहा है, हैं? क्योंकि आप क्योंकि आप देखो अगर डी मांगा है उसकी परफॉर्मेंस। वही मैं कह रहा हूँ I'd like to say, Sujay, on this, when we decide, I mean, when it is decided, the nominees and who gets the award, why is this a prestigious award? It is given by the players. ठीक है, the nominations are done by the association, the awards are finally given by your peers, so इसकी वैल्यू काफी हाई हो जाती है, एंड इसको प्राइमरली देखा जाता है अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशंस इन इंग्लैंड। तो आपकी लीग कप, एफए कप, प्रीमियर लीग, तीनों को वैल्यू मिलती है। ब्रूनो का बेस्ट परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड में नहीं है, यूरोप में है, तो इसलिए और लोगों को सरप्राइज करता है। प्रीमियर लीग के स्टैट्स, अगर सिर्फ स्टैट्स पे, आई नो आई एम द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट स्टैट्स जनरली, बट अगर सिर्फ स्टैट्स देखो, 8 गोल 10 असिस्ट, नॉट, सी आई नो ही केप्ट देम फ्रॉम more misery, but it's not like he was able to drag his team upward. 15 is not okay. It is definitely not.
So For a that is why, squad that and big and a squad that expensive. हाँ, and just the name of the club itself, इतना थोड़ी गिरना था. तो Exactly. and his best performances, as I've said, were in Europe. तो ये तो मेरे लिए काफी surprising inclusion है. But United, go United, एक नाम आ गया बस इसीलिए. I think that part is there. So कोल पामर का क्या बोलते हो रेक्स भाई? Well deserved या maybe He has an on and off season. Literally for few months, it looked like Cole Palmer isn't cold anymore. लेकिन वो एक्चुअली में कोल्ड हो गया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन लास्ट में जो उसका रन आया है चेल्सी के साथ, क्योंकि चेल्सी में एक टाइम पे मिजरी पे चल रही थी अराउंड जनवरी जैन फेब में, ठीक है, लास्ट में जो पिकअप किया है इसलिए उनको यूसीएल मिला है, वरना तो उससे भी निकल जाते वो, पहले कहा टाइटल रेस में थे, फिर यहाँ पे टॉप 5 ही नहीं निकल रहा इनका। तो कोल पामर का मुझे लगता है कि हाँ बनता है, क्योंकि हाँ स्टार्स वाइज अगर आप देखोगे कि लास्ट सीजन जो बैंगर ऑफ द सीजन था उसका 20 गोल्स इन द लीग सीजन, वो वाला नहीं होता हर बार, वो वैसे चांसेस हमेशा नहीं मिलते क्योंकि वो स्ट्राइकर के पीछे खेलता है। और इस सीजन तो ज्यादा वो आगे गया भी नहीं, वो मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स उनके तो 2 विंगर्स ने मारे हैं या फिर स्ट्राइकर कभी कभी अगर चांस मिल जाए तो, वैसे ही बहुत मिसेस करता रहता है वो आदमी। तो मुझे लगता है फेयर है, ये फेयर है, मतलब जितने बड़े क्लब से उठाए ना नाम, कोल पामर I think is kind of genuine name which you can pick. Okay. अगला कौन है? डेक्लन राइस पे आ जाए। Let's talk about McAllister and you tell us तुझे something about him. लिवरपूल पे आते हैं, पहले डेक्लन राइस फिर अलेक्जेंडर इसाक, फिर चलते हैं लिवरपूल में 2 है ना उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, वही दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना। डेक्लन राइस बताओ भैया। डेक्लन राइस was his season's highlight in England though? Was his season's highlight in England? His season's highlight was the 2 free kicks. That moment itself, but overall performances, I think I would say banta hai. I mean, from that Arsenal squad, Saka was injured for a decent amount of time, unfortunately for Arsenal. I think Saliba was injured, Gabriel was injured again, I forgot. Gabriel was more injured. So I think फिर उस team में Declan Rice, and considering Odegaard underperformed even for his like standards as well, I think Declan Rice banta hai. The team came second. The team did well in some competitions as well. Didn't go too far, but well enough. And second position, Declan Rice, we know he has quality, and he's been able to show his qualities more and more with the seasons, especially इस season और उसकी prolific Declan Rice, हाँ इस season तो उनका best player था यार। Odegaard had a very off season, very ordinary season. मिडफील्ड उनकी यही रन कर रहा था जो कर रहा था, नहीं तो बाकी कोई कुछ खास कर नहीं पा रहा था। Exactly. तो आगे चलते हैं फिर। आई थिंक डेक्लन राइस इज वेरी जस्टिफाइड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अलेक्जेंडर इसाक, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू से अबाउट इट। मतलब कितने उसने 27 गोल मारे इस सीजन में? नहीं, वो होता है ना आपका, मतलब जो प्रीमियर लीग में 23 गोल। कोई होता है कि जिसके लिए रीजंस देना पड़ता है, इसमें आप रीजन गिनाओगे तो आप बैठ जाओगे गिनाने के लिए बस। एग्जैक्टली। एंड भाई 23 गोल आफ्टर इंजरी, बीच में कुछ एटलीस्ट अ फ्यू वीक्स उसने इंजरी में मिस किए हैं, क्योंकि लीग कप में वो वापस आया था इंजरी से, जो लीग कप फाइनल में लिवरपूल, तो उससे पहले वो मिसिंग था फॉर अ मंथ और सो। He probably would have had an even better season. You're right there. So I think not that Newcastle doesn't have, they have a good team. He has a good team beside him. Still he shines as one of the few great number 9s at the moment in world football as well. He's possibly the best number 9, young number 9 at least. I'm not talking about the established ones, Harry Kane, Lewandowski, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। Young 9 की अगर बात करो तो सेस्को, ग्योकेरेस जिसकी हमने कल के वीडियो में बात करी थी, वो एकेटीके हो गया। इन सबसे तो Isak is the Julian Alvarez is not your out and out number 9 number 9 ना, ट्रेडिशनल नंबर 9। अगर थोड़ा और ट्रेडिशनल स्टाइल बात करें तो ये स्टैंड आउट करता है, लाइक बहुत इजीली स्टैंड आउट करता है। नो वंडर ही हैज that huge attack, like price tag on him at the moment if he wants to move, if Newcastle allows him to. Latest reports are Newcastle is saying ठीक है इसाक के बारे में बात करनी है तो पहले 200 मिलियन टेबल पे रखो फिर बात करेंगे। तो ये तो हाल है। बट अगेन यू कांट रियली, अगर ग्योकेरेस के कोई 100 मिलियन मांग रहा है ना, तो
ईसाक भी बोल सकते हैं भाई। अब आ जाते हैं उस पे, लिवरपूल पे, मैकलिस्टर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैकलिस्टर वाज वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स दिस सीजन। He was extremely crucial for Liverpool. भाई साहब, मिडफील्ड कंट्रोल एंड ग्राउंडबर्ग का सब बात करते हैं कि यार जो सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन था नंबर 6 पे, ग्राउंडबर्ग डिड नॉट हैव टू डू इट ऑल अलोन बिकॉज मैकलिस्टर वाज ऑलवेज देयर। टैकल नंबर्स मैकलिस्टर के देखो आप, पासिंग नंबर्स देखो मैकलिस्टर के, मैकलिस्टर का एक्चुअल कवरेज देखो ऑफ द पिच, एंड भाई साहब जो उसने लॉन्ग रेंज स्क्रीमर्स मारे ना इस पूरे सीजन में, दे के राइट फुट लेफ्ट फुट बोथ, तो आई डोंट थिंक इट इज अ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स नॉमिनेशन कि भाई ये कहां से आ गया। आई कैन प्रोबब्ली थिंक ऑफ बेटर प्लेयर्स इन, बट ही जितना क्रूशल वो था टू फॉर लिवरपूल टू विन द टाइटल, I'm not surprised. I'm honestly not surprised कि Alexis McAllister is actually getting his recognition in that sense. क्योंकि ये जो चीज है ना जो डिलीवर किया है उसकी वैल्यू इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अर्जेंटीना के लिए वो एडवांस रोल में खेलता है, जबकि लिवरपूल के लिए वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेलता है क्योंकि ग्रावेनबर्च को हेल्प आउट करने के लिए स्लॉट ने उसको वो रोल दिया है, उसको और सोबोस्लाई को, दोनों ही एडवांस रोल में खेलते हैं अपने नेशनल टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे डिफेंसिव खेलते हैं। सोबोस्लाई तो यहाँ पे फिर एडवांस खेलता है, उसके यहाँ पे भी काफी एडवांस खेलता है। मैकलिस्टर he goes आगे पीछे, he helps a lot in defense. दिखता and नहीं है he's one of उतना those भाई। players that you have to see, I think, to appreciate. Exactly. You have to be like, अरे हाँ, I have to sit and observe McAllister अलग से, and that is possibly the best thing you can say about a player in his role, to be honest. You're not trying to be everything, you're trying to be whatever your team needs you to be. Yes. That is, I mean, he's done that well this season. Yes. फिर उसके बाद तो भाई मोहम्मद साला क्या करनी है, क्या बात नहीं, क्या मतलब करता है उसका भाई, अगर इसके अलावा किसी को दिया तो फिर बदतमीजी हो जाएगी। This award, I know the rest 5 are nominees. This guy is a sure shot winner. He's about to create the record, 3 times PFA Player of the Year. He's already won it twice. 2018 once and recent भी जीता था। Last year जीता था। वो गोल्डन बूट वाला सीजन 2022 जिसमें सॉन्ग के साथ जीता था वो वन 22 तो 18-19 जीता था शायद ये। मेरे को ऐसे याद भी नहीं। Honestly, again going back also, भी आप इस सीजन की भी अगर बात करो यार, 29 goals, 18 assists, and I've said this repeatedly on this channel as well, अगर मोहम्मद सलाह नहीं होता तो टाइटल तो भूल ही जाओ, टॉप 4 के भी वांदे लग जाते, टॉप 5 सॉरी, टॉप चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के भी हो जाता कि भाई मुश्किल है मामला, because and he's done this while in the shadow of not having a contract for a lot of this season. बल्कि कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद ही थोड़ा फॉर्म हिला। नहीं उससे पहले ही थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया था। But yeah, I mean, just another epic season by Mo Salah, who I think just continues to enhance his legacy in the Premier League, and I think whenever he decides to retire, और अगर लिवरपूल चाहती तो इस साल भी जा ही सकता था वो, 2 साल में चला जाएगा, 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नहीं होगा एक्सटेंशन। तुमने तो हार्डली इस साल रखने की सोची थी। I think he's going to be a Premier League legend, undoubtedly. वो सारी ग्रेटनेस ना इससे पता चलता है क्योंकि उसने एफएसजी को मजबूर कर दिया कि अपने आउट ऑफ द वे जाके वर्चेस देने के लिए। नहीं, सी आई थिंक द सिचुएशन वाज, जो मतलब जहां पे अटकी हुई थी सिचुएशन, दैट वाज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। लिवरपूल वाले कह रहे थे कि 1-1 साल करके बढ़ाएंगे, दिस गाय वांटेड 3, दे सॉर्ट ऑफ अग्रीड ऑन 2, एंड ऑब्वियसली वेजेस का थोड़ा सा था ही, बट आई डोंट थिंक वेजेस में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में। इट वाज जस्ट मोस्टली अ साल का कि भाई, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि नेक्स्ट ईयर इसको बेच भी देंगे सऊदी, if they want to make some money out of it. Doesn't look like a smart move, but okay. भाई अगर उसके बाद भी फ्री में जाएगा तो पहली बेच दो 1 साल, उससे ज्यादा एक्सटेंशन तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। मॉडर्न फुटबॉल, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है ये लास्ट, मेरे ख्याल से भी ये लास्ट है, बट अगेन वी डाइग्रेस। एट दिस पॉइंट इन टाइम, दिस मैन इज, आई थिंक ही इज अ श्योर शॉट विनर ऑफ द PFA प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन। ऑनेस्टली नॉट बैड फॉर अ वन सीजन वंडर। That's what he was called? He was called that. Okay. He was called that. Throughout his never जिन दोनों ने सबसे who called it, it never looked like दोनों के लिए यही टैग मिल रहा है, राफिनिया को भी वही मिल रहा है अभी। हाँ
But yeah, it honestly never that's where looked we like are. that for Salah. Premier Hmm. League legend to be great season again. I think for me I even I think think. he's already there in terms of Premier League legend status. हाँ, I know nostalgia is a very powerful emotion, but hmm, honestly, in terms of number and in terms of impact on a team, hmm. I think he's already the greatest right winger. I think still like a topic that you can talk about, but still, even I Yeah. believe he's like it's either him or Ronaldo, and brilliant. Ronaldo was मतलब both very right hard to and left, decide, and but Ronaldo wasn't this long in there. हाँ मतलब वही है. I believe that longevity And भी है. He wasn't there in the Premier League for longest, so. रोनाल्डो wasn't. रोनाल्डो का इम्पैक्ट टीम पे और सलाह का इम्पैक्ट टीम पे. Ronaldo was surrounded by serial winners. Salah came into a team and made them winners. That is a huge difference. हाँ, उसको he had discount help. करते हैं लोग. Van Dijk है, नहीं, Alisson, I know, but others help. आप Mane, Firmino, but yes, I agree on that point. कि like यार वो रोनाल्डो किस बहुत टीम में फर्क आया है. था और ये किस टीम में आया, तो ये देखना तू फर्क. हाँ, so Premier League में it will be something people will Again, always talk about. I will हाँ, never say कि Mohamed Salah is better than a Ronaldo or a Messi overall. I'm just talking Premier League, nothing else. हाँ, it's a fair judgment on him. So yeah, honestly speaking, एक दो players अगर mention करने हैं हमने who should have been there. I'm not saying किसकी जगह apart from Bruno, बाकी सब की का कुछ नहीं बोल रहा मैं. Mbeumo Mbeumo, deserved. I think he deserved. does. Mbeumo का Deserved. अगर Yeah, आप सीजन देखो, 20 गोल मारे हैं उसने, 7 असिस्ट हैं. I think he did. I was also surprised not to see his name. So yeah. That's what. And he did well. And यार अपनी टीम को ब्रेंटफोर्ड कहाँ फिनिश करे थे वो लोग? 10 फिनिश किए थे. I know it is not as impressive, but he was very important in them finishing 10th, 5 paces above United and 7 above Tottenham. And those are bigger clubs in terms of finances. I'm not trying to throw shade, honestly. I'm genuinely not trying to throw shade. I'm talking about the financial might of both these clubs as compared to Brentford. Sure, So Mbeumo doing that for a season, that is something that should have been appreciated with a yeah, nomination. yes. ठीक है. The Also, name and advertising. Chris Wood, Nottingham Forest Chris का Wood, Chris yes. Wood. Nottingham Forest this season was a big revelation. Nottingham हाँ. Forest एक टाइम पे तो भाई टॉप 5 में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे. बाद में टेल ऑफ हो गया उनका सीजन. एंड ऑनेस्टली Top स्पीकिंग वो 5, लोग I एक thought easy top 4 for Nottingham. मतलब once easy, they had begun that run, I thought easily they might take it. नहीं, But मैं of टॉप course, 5 still. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैंपियंस लीग स्पॉट्स 5th पे न्यूकासल फिनिश करी है 66 पॉइंट्स पे. नॉटिंघम फॉरेस्ट 65 पे फिनिश करे हैं. No, it was very close, and you क्रिस kind वुड. of were, they left you kind of hoping that Nottingham would हाँ finish first. हाँ हाँ. So, So I mean, would be yeah, able to finish stronger. So, exactly. Chris Wood was a that's what. huge part of that. He's 20 very, goals he's मारे हैं और उस बंदे ने पूरे सीजन में 20 33, गोल का 34. सीजन. His age is 33, 32, 34, 33, I think so. वैसे Like, मेरा आप दोनों से एक सवाल है. हाँ जी. ये जो लिस्ट निकली है, नॉमिनेशन है, इसमें कोई डिफेंडर या गोलकीपर क्यों नहीं? वो तो PFA मतलब वाले ऐसा कोई डिफेंडर बताएंगे. गोलकीपर था ही नहीं जिसका अच्छा सीजन गया है. देखो नहीं, ऑनेस्टली बोलूं, Van Dijk, as I mentioned at the ये start, could have been a this nominee. season नहीं, not this season. I'm a Liverpool fan, a hardcore Liverpool fan in the last 21 years, but not this season. Because Liverpool बहुत बार खुली है डिफेंस में, बहुत बार खुली है. And this season was not the best defensively throughout the league. मतलब एक दो टीम्स का अच्छा था डिफेंसिवली, बट सबने खाए हैं गोल. भाई यार कितने स्ट्राइकर 20 से ऊपर मार गए हैं, अभी गिना दिए हमने इतने सारे तो. एंड आप अगर देखो ये 6 में से अगेन आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा कोई भी बहुत ज्यादा डिबेटेबल स्पॉट है नहीं. मे बी यू कैन डिबेट अबाउट अलेक्सिस मैकलिस्टर इफ यू आर ऑफ अ हार्डकोर यूनाइटेड इल्क और हार्डकोर आर्सेनल इल्क, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और उन जगहों पे भी आप हमने ऑलरेडी 2-3 प्लेयर्स गिना दिए हैं. तो डिफेंडर्स का इट वाजंट द बेस्ट सीजन पॉसिबल. we've had better seasons from defenders. बाकी तो फिर वो भी है ना कि डिफेंडर्स को ज्यादा करना पड़ता है कि उनका कंट्रीब्यूशन दिखे, ताकि वो नॉमिनेशन में आए ये सारे इंडिविजुअल अवार्ड्स. एडवांटेज तो पहले ही है उनका. वो तो है यार. एंड देखो यार, अ डिफेंडर्स जॉब इज मच हार्डर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अ स्ट्राइकर needs to be okay. A striker needs to be accurate once, maybe twice in a game. A defender needs to be accurate throughout the game. That is a big differentiation, so to speak. But yeah, that is the way of football. अगर डिफेंडर्स को मिलता ही होता तो कानोवारो के बाद आज तक किसी डिफेंडर को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है वर्ल्ड स्टेज पे.
वो भी कानावारो को इटली वर्ल्ड कप जीत के मिला था। बैलन डोर फिनिश शायद वैन डाइक सेकंड फिनिश किया था, उसके पहले कुछ नहीं था। कानावारो बैलन डोर जीता था ना शो? हाँ कानावारो के बाद देख लो, कानावारो के बाद सीधा वैन डाइक का आया नंबर, बीच में किसी की बात नहीं हुई इतनी। तो वो थोड़ा बहुत तो अनफॉर्चुनेट है ही, बट ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। आई थिंक वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट ऑल थ्री ऑफ अस कि कहाँ जा रही है ये ट्रॉफी। अब ये मुझे नहीं पता कि अगस्त में क्यों रखा है इन लोगों ने, नॉर्मली तो उससे पहले थोड़ा सा पहले हो जाता है। हाँ, I mean they want to as season opener के साथ they want to give the award. I think that is the reason. 19 को है ना, 19 को है शायद, 19 अगस्त को, विच इज उसके अ लॉन्ग टाइम फॉर सम रीजन। long पर sure. या एक और चीज अनाउंस हो गई भाई लोग, कम्युनिटी शील्ड का वो अनाउंस हो गया डेट, 10th अगस्त को कम्युनिटी शील्ड है। एंड एज वी ऑल नो, कम्युनिटी शील्ड इज ऑलवेज बिटवीन द विनर ऑफ द प्रीमियर लीग एंड द विनर ऑफ द एफए कप, सो इट विल बी लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस ऑन 10th of August. Again, it's not the biggest trophy so to speak, but it's a good trophy to start with. At least a good game to get into the season with. Yes. ओपनर अच्छा हो जाता अगर सिटी होती तो, लेकिन भाई अर्न किया है क्रिस्टल पैलेस से, क्यों मतलब ये ना भाई, I'm glad that City नहीं है. I think all of us are glad City नहीं है. तो but I think that's it for today भाई लोग. What do you think? इन 6 में से किसको मिलना चाहिए, और अगर वो साला नहीं है तो क्यों नहीं है, प्लीज नीचे कमेंट्स में बताना जरूर से। एंड आउट ऑफ दीज 6 हु वुड यू रिप्लेस एंड विद whom, ये नीचे कमेंट में जरूर से बताना, बिकॉज हमने अपना अपना ओपिनियन दिया कि ब्रूनो की जगह कौन और ये और वो। आप भी बताना कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। बाकी तो एज यूजुअल वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यार नंबर्स बढ़वाओ प्लीज, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो यारी दोस्ती में। एंड या बाकी तो यही कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अगले हफ्ते फिर से चालू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।